Yesterday we have seen this quality control test, water attack test, powder glass test. In continuation with that, parental products, we will see the remaining points. Okay, we have seen this also yesterday. This slide also. Yesterday we have seen this also. So from what are going to from today? Okay. So first, pyrogen test for parental preparation. So what do you mean by pyrogens? I have already explained to you. Pyrogens are nothing but the metabolic product of your bacteria. Mostly they are lipopolysaccharide in the nature. Lipopolysaccharide nature होता है उनका and they may be either peptides. Protein भी हो सकते हैं, peptide भी हो सकते हैं, लेकिन mostly क्या होते हैं lipopolysaccharides. They are the metabolic product of your bacteria and they are capable to increase your body temperature. They can cause you pyrexia. That's why they are known as a pyrogen. Pyro means pyrexia. Gen means constipation. Pyro means pyrexia, gen means agent. So those agents which will increase your body temperature, they are known as pyrogens. Now parenteral products are nothing but these are the products. They have to you are introducing these products directly into internal environment of your body, crossing your first line defense of the body, that is skin. स्किन के अंदर जाके इंजेक्ट करते हो ना. फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या है? स्किन ही. तो कुछ भी इन्फेक्शन जो होता है वो पहले स्किन के ऊपर ही रहेगा, वहां से एलिमिनेट हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा. So you are bypassing that. So the sterile this preparation parental product must be sterilized, properly sterilized. They should ensure the sterility test. Then they should be free of pyrogen. They should be free of any foreign particle, any contaminant or any toxins. First criteria, first quality control test, that is a pyrogen test. Pyrogen test. So your product should be free from pyrogen. So in that you have two tests. First one is known as a in vivo pyrogen test. Second one is known as a in vitro pyrogen test. So in vivo means what? In vivo means inside the body. In vivo means inside the body. In vitro means outside the body. So this in vitro test is done in the laboratory or by using test tube. टेस्ट ट्यूब में ये आप एनालाइज कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट में पायरोजन है क्या नहीं. एंड इन विवो टेस्ट मींस व्हाट? इन विवो मींस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम. नाउ व्हाट काइंड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम? इन द रैबिट. सो यू हैव टू टेक 6 रैबिट्स. यहाँ पे आपको क्या करना है? यू हैव टू सिलेक्ट 6 रैबिट्स. 6 रैबिट्स आपको लेना है जिनमें टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए. सो यू हैव टू सिलेक्ट 6 healthy rabbits. Okay, you have to measure the temperature of them. That is the rectal temperature. तो उनके रेक्टम में क्या करो? थर्मामीटर इंसर्ट करो, उसका टेम्परेचर चेक करो. right? और सबका टेम्परेचर सेम ही आना चाहिए. So there should not be difference in the temperature of 0.2 degrees Celsius. So if there is a difference in the temperature of anyone, so that rabbit you have to reject. So you have to choose the 6 rabbit which are having similar temperature. Temperature is measured by inserting the thermometer in the rectum. Okay. In vivo pyrogen test is also known as sham test. Question as it is आता है इसके ऊपर. So one of the following pyrogen, one of the following test for pyrogen is known as a sham test. तो यहाँ पे याद रखो there are two kind of test for pyrogen. First one is known as a in vivo test. In vivo मतलब ये rabbit के biological system के मतलब in vivo means in the biological system. In vitro means in the without biological system or in vitro means in the lab. In vivo means inside the body. In vitro means outside the body. So in vivo pyrogen test, that is known as the rabbit test. You have to select the 6 rabbits for the test, 6 healthy rabbits, and there should not be difference of temperature, their body temperature of 0.2 degrees Celsius से ज़्यादा temperature नहीं होना चाहिए difference उनका. So you have to select 6 rabbits, and it is also known as sham test. SHAM, sham test. Sham test किसको बोलेंगे? It is a in vivo pyrogen test. Now what you have to do, once you selected the rabbits, everything is okay. Rabbits are not having temperature difference more than 0.2 degrees Celsius in their body temperature. ठीक है, सबका बॉडी टेम्परेचर सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं उसमें 0.2 से ज़्यादा. तो वैसे 6 रैबिट्स लेना आपको. यू हैव टू सिलेक्ट 6 रैबिट्स. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक योर प्रोडक्ट because you want to test your product whether your product has a pyrogens or not. Okay, now how can you test? You have to inject your product into the rabbits. So okay, and you have to measure the temperature after interval, after specific time. Okay, if there is an increased body temperature of rabbit, that means your product has a pyrogens. If there is no increased temperature in the rabbits, that means your product will not have pyrogens. Okay, so measurement of increased
temperature. Measurement of raised temperature after injecting the solution under test. Means injection under test into the rabbits via marginal vein, not exceeding for at an interval of 4 minutes. ठीक है, तो मतलब ये 6 रैबिट लेना है आपको. आपका सॉल्यूशन अंडर इन्वेस्टिगेशन उसके रैबिट का जो एयर होता है, एयर रैबिट के जो कान होते हैं उसके पीछे एक वेन होता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल वेन. सो यू हैव टू इंजेक्ट दैट सॉल्यूशन इनटू मार्जिनल वेन ऑफ योर रैबिट नॉट एक्सीडिंग एट अ इंटरवल ऑफ 4 मिनट. तो सभी मतलब 4 मिनट के अंदर ही सभी इसमें आपको इंजेक्ट करना है वो. नाउ इंजेक्शन वॉल्यूम. ओके, व्हाट इज द इंजेक्शन वॉल्यूम ऑफ योर solution on the test? So injection volume not less than 0.5 ml and not more than 10 ml per kg. So injection volume के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं. What is the injection volume for Paragon test? So not less than 0.5 ml and not more than 10 ml per kilogram of body weight of your rabbits. After injecting your test sample into rabbits airway. Again, depending upon your type of solution or type of injection, the amount to be injected it varies. वो change होता है कितना देना है. Now you have to record the temperature of each rabbit at each 30 minutes. ठीक है, हर एक आधे घंटे के बाद आपको हर एक रैबिट का टेम्परेचर मेजर करना है, कितना इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, नोट डाउन करो. सो अप टू 3 hours you have to measure the rectal temperature of your rabbit after injecting your testing solution at the interval of 30 minutes up to 3 hours. 3 hours तक आपको आधे आधे घंटे में उनका रेक्टल टेम्परेचर मेजर करना है और नोट डाउन करना है, और बाद में जाके देखना है कि कितना टेम्परेचर बढ़ा है, कितना लेवल बढ़ा है, कितना नहीं बढ़ा है. ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड बिटवीन द रैबिट्स. इट इज टेकन एज अ रिस्पॉन्स. मतलब अगर आपने एक रैबिट में रैबिट का इनिशियल टेम्परेचर था मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, और आपका इंजेक्शन देने के बाद उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया लाइक 38 डिग्री सेल्सियस हो गया. दैट मीन्स योर सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ पायरोजन. दैट मीन्स योर टेस्ट सोल्यूशन विल बी फेल्ड फॉर पायरोजन टेस्टिंग. सो इफ देयर इज इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ रैबिट, दैट मीन्स solution is not pyrogen free. Now another test is there known as in vitro test. In vitro test for pyrogen. In vitro means in the lab, in the test tube. Okay, so in vitro test means lal test. Lal means limulus amoebocyte lysate. So lal test means what? Limulus amoebocyte lysate. So it is a particular test for endotoxin monitoring. कि आपके solution में endotoxin है क्या नहीं. So endotoxin is nothing but they are also responsible for the increase in body temperature. So you can call them as a pyrogens. So endotoxin or pyrogen. So again, so what you have to do? Limulus amoebocyte lysate. It is a test for detection of endotoxin based on the clotting of horseshoe crab lysate and endotoxin. Horseshoe crab lysate and endotoxin. आप बोलेंगे horseshoe crab lysate क्या होता है? So it is nothing but the blood of your that खेकड़ा. horseshoe crab मतलब खेकड़ा एक तरीके का खेकड़ा रहता है, वो खेकड़े का ब्लड निकाल के वो सेंसिटिव रहता है पायरोजन के लिए बहुत ज्यादा. तो इट इज अ टेस्ट limulus amoebocyte lysate test for detection of your endotoxin. It is based upon the clotting reaction of horseshoe crab lysate, that is the enzyme present in the blood of your crab, and endotoxin. तो अगर आपके प्रोडक्ट में एंडोटॉक्सिन है या फिर पायरोजन है, तो पायरोजन लाइसिट एंजाइम जो है उसके साथ में रिएक्ट होके क्लॉटिंग फॉर्म करेगा. दैट मींस देयर इज अ पॉजिटिव टेस्ट. मतलब इफ देयर आर पायरोजन्स, इफ देयर आर एंडोटॉक्सिन, देन दैट blood of your this crab will be clotted. Okay, so specimen along with your sample is incubated with the limulus amoebocyte lysate to check the sensitivity. Okay, formation of gel clot is a positive test for endotoxin. मतलब क्या यहाँ पे ये horseshoe crab का जो है limulus amoebocyte lysate, इसको लेना है, उसमें आपका सैंपल डालना है और चेक करना है whether there is a clotting or not. So if there is a clotting, that means there is a positive test. Positive मतलब क्या कि आपके इंजेक्शन में क्या है, एंडोटॉक्सिन है. So if there is no endotoxin in your injection, so there will be no clotting of your that blood. Then this endotoxin test or limulus amoebocyte lysate test is very sensitive. It is a highly sensitive even if your injection has 0.005
5 endotoxin unit per ml. So that also can be detected by this limulus amoebocyte lysate test, right? So it is very sensitive test. Again, the drawback of this LAL test is nothing but the it can give false positive result with the glucan. If there is a glucan in your formulation, though there is no presence of any endotoxin, so that time test can be positive. So glucan अगर है तो उसमें गलत रिजल्ट देगा, ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब पायरोजन नहीं है, एंडोटॉक्सिन नहीं है, फिर भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा अगर ग्लूकान है तो। अगर ग्लूकान नहीं है मतलब अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो पायरोजन है। सो लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, इसके ऊपर कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। टाइप्स ऑफ लाल टेस्ट, लाल टेस्ट के टाइप कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ लाल टेस्ट, so equipment used for the test must be free from any kind of endotoxin. There are different methods for this LAL test. First method is nothing but the gel clot method, turbidimetric method, and C colorimetric method or chromogenic method. So there are different methods: gel clot method, turbidimetric method, colorimetric method. So if you want to go in the detail, you can go and read from various reference books. But I don't think it is very important. यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखें कि what is लाल, what is limulus amoebocyte lysate, from where it is obtained, how, what is the significance of this test. तो in vitro test है आपका, सबसे पहले कि ये in vitro test है, and that is a limulus amoebocyte lysate. So limulus amoebocyte lysate test for detection of endotoxin based upon the clotting reaction. इसके ऊपर as it is क्वेश्चन आया. So one of the following test involve the clotting reaction between sample and blood of crab. LAL test, limulus amoebocyte lysate test. You have to incubate this limulus amoebocyte lysate along with your preparation. Okay, incubation should be there. And if there is a clotting, then that means there is a presence of endotoxin. So there are different tests for LAL test. Clot, gel clot method, then turbidimetric method, and colorimetric method. Then again there is another test known as a whole human blood test, known as a human blood whole test. Paragen they can induce release of the chemicals like inflammatory substances. So paragens induce the human monocytes to release the inflammatory substances like cytokines, interleukins. So measurement of these inflammatory chemicals is done in this test. So test involves the incubation of whole blood culture with the human blood, analysis of specific cytokines after a specific time. मतलब क्या कि आपका प्रोडक्ट और ह्यूमन ब्लड दोनों साथ में इंक्यूबेट करो, ठीक है। इनिशियली उसमें उतना इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स नहीं रहेगा ब्लड में। अगर आपके प्रिपरेशन में पायरोजन है तो वो क्या करेंगे, दे विल stimulate the monocyte to release the inflammatory chemicals like cytokines and interleukins, which can be checked by using different methods. तो अगर उन्होंने cytokine रिलीज किया ब्लड में, that means there is a pyrogen. For pyrogen you have different tests. First is in vivo pyrogen test known as a sham test or rabbit test. Second test is known as a in vitro pyrogen test known as a LAL test or limulus amoebocyte lysate test. Third test is nothing but the second test is limulus amoebocyte lysate or endotoxin monitoring test. Third test is nothing but the human whole blood test, and fourth test is nothing but the advanced endolysa test. Endolysa, ठीक है. So first commercially available solid phase based method for endotoxin detection. Now in this method the use of factor C, use of recombinant factor C with the fluorogenic substrate detection for endotoxin. बस इतना याद रखो आप कि एंडोलिसा एक टेस्ट होता है, that is solid phase based method for endotoxin detection. So these are the method for endotoxin detection. Endotoxin के लिए कितने methods है याद रखो. There are 4 methods. First method is in vivo method. So it is also known as a sham test or rabbit test. Second method is known as a in vitro pyrogen test or LAL test or endotoxin monitoring test. Third test is known as a human whole blood test. Fourth one is endolysis. So these tests will confirm whether your product has a pyrogens or endotoxin or not. Okay, types of parenteral formulation. Parenteral formulation कितने हैं? Injection कितने टाइप के होते हैं? So first one is nothing but the freeze dried product. So freeze drying मतलब क्या? So final your blend
which is prepared aseptically. जो भी आपका इंजेक्शन के लिए जो पाउडर लगता है वो aseptically prepare करना है आपको. So throughout you have to prepare that powder aseptically, and then you have to dry that by using freeze dry. So you will get only powder, freeze dried powder. So freeze dried parenteral product. The percentage of solid in the frozen solid should be between 2 to 5 or 25%. ये याद रखो. So in case of your freeze dried product, what is the percentage of solid? 2 to 25%. Freeze dried parenteral product, the percentage of solid in frozen solid should be between 2 to 25%. Now, amongst these, suppose that आपका ड्रग बहुत ही कम क्वांटिटी में, if your drug is light, like if your drug dose is 1 milligram or 2 milligram, so you cannot make that injection. Okay, so for that you have to increase the bulkiness of that, you have to use various kind of additives, okay, or bulking agent. So among the best, salt providing the uniform crystal size, uniform color and texture, physical strength and rapid reconstitution. They are nothing but the monobasic and dibasic calcium phosphate. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. क्वेश्चन आया था वो जो क्वेश्चन आता है आपको. ओके, क्वेश्चन आता है आपको ऐसा. वन ऑफ द फॉलोइंग is used as a most common bulking agent in the freeze-dried parenteral product. So one of the following is the most commonly used bulking agent in the freeze-dried product. Monobasic और dibasic calcium phosphate. Widely इससे पहले सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं. Sodium chloride is often used, but there is one problem with sodium chloride. If it is used as a bulking agent, what will it do? It will shrink in the volume of total powder. Finally, जो powder बनेगा उसका volume कम हो जाएगा. Sodium chloride is often used, but when it is used alone, the cake tends to shrink markedly in the volume and appears to be crusty or crumbly. So इसके ऊपर कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है. फिर से याद रखो. Most commonly used bulking agent in the freeze dried product. What are they? They are nothing but the monobasic and dibasic sodium phosphate. Sodium chloride is also commonly used as a bulking agent in the freeze dried product, but when it is used alone, the cake tends to shrink markedly in the volume, and it may appear like a crusty or clumpy. That is the disadvantage of your sodium chloride. बस मोस्ट कॉमनली अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बल्किंग एजेंट, तो इसको टिक करना है. इसको मोनोसोडियम एंड डाइसोडियम, मोनोबेसिक एंड डाइबेसिक सोडियम फॉस्फेट. दैट इज द आंसर. ऑलरेडी ये 2-3 बार आ चुका है. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर यूज्ड लाइक मैनिटोल, सुक्रोज, चिलेटिन. If they are used as a bulking agent in the freeze-dried parenteral products, so what will happen when they are used to provide the solid? They are used to provide the solid support for the cake. Solid support for care must be taken. You have to take care during heating, particularly during terminal stage of heating and drying, so they can discolorate your preparation. To avoid the discoloration of cake by charging, तो ये जब यूज करते हैं मैनिटोल, सुक्रोज, सॉर्बिटॉल, कभी कभी बिकॉज ऑफ हीटिंग साइकिल ये थोड़ा क्या होगा, ब्राउन भी हो सकता है या फिर चार्ज भी हो सकता है, तो डिस्कलरेशन हो सकता है. Then second type of parenteral product is nothing but the ophthalmic preparation. Ophthalmic preparation means these are the sterile dosage form which are meant to instilled into eye cavity, instilled into conjunctival sac in the form of eye drop. Ophthalmic preparation should be again isotonic, again free from pyrogens. Whatever eyes are there, eyes can tolerate pH from 6.5 to 8. ओके, इस रेंज में अगर pH है उसका तो उसको टॉलरेट कर सकते हैं. अगर इसके बाहर का pH का सोल्यूशन का pH है तो उसके बाद में क्या होगा, इरिटेशन होगा. तो eyes can tolerate this pH 6.5 to 8. So again ophthalmic product should be pyrogen free, then sterile. Okay, there is a little bit relaxation in case of ophthalmic product. जैसे होता है कि आइज में क्या है कि आइज में पायरोजन का एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ, तो उसमें अगर पायरोजन हुआ तो ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला. बट आइडियली इट शुड बी अगेन आइसोटोनिक एंड पायरोजन फ्री. आइज में अगर पायरोजन कंटेनिंग सॉल्यूशन है आपका, वो डाल दिया आपने तो पायरोजन अंदर नहीं जाएंगे बॉडी में, बिकॉज इट इज नॉट परमिटेड to get adsorbed into, as it is a parenteral product. It should be sterile and pyrogen free. Remember, eyes can tolerate the pH of 6.5 to. Again, depot preparation or long acting preparation
for parenteral use. So long acting preparation like dissolution control depot formulation. Dissolution control depot formulation. जैसे मैंने बोला कि implants. Implant क्या है? Parenteral product है. So they should be sterile, biogen free. So you have to make a surgery below the skin. You have to place that implant. Formation of salt with very low water solubility is one of the most common approaches to these type of formulation. अगर आपको formulation long acting बनाना है, so if you want to make a long acting parenteral preparation, what are the different approaches? First approach is nothing but formation of drug with the formation of drug salt with a low water solubility. अगर उसका solubility कम होगा तो उसका क्या होगा? Action slow होगा, मतलब sustained release होगा. So formation of salt with a very low water solubility is one of the most common approaches for this type of formulation. Second approach is nothing but the binding of drug molecule, binding of drug molecule to the adsorbent, so that drug molecule will be released slowly. Then third approach is nothing but the esterification of drug. Ester should be biodegradable. So biodegradable esterification of your drug with the biodegradable polymers. Then again fourth approach will be encapsulation of drug in a biodegradable or bioabsorbable polymer. तो इन चार मेथड से आप डेपोट प्रिपरेशन या फिर लॉन्ग एक्टिंग पेरेंटल प्रिपरेशन बना सकते हो. First is nothing but by making drug salt which are having less water solubility so that you can prolong the action. Then again by binding the drug with adsorbent molecule. Third approach is esterification of drug with biodegradable esters. Fourth approach is nothing but the encapsulation of drug with biodegradable polymer or bioabsorbable polymer. For example, like gelatin, phospholipids, and long chain fatty acids. So that's how you can make a long acting parenteral products. Now parenteral suspension, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि कितना solid content होना चाहिए. In case of parenteral suspension, solid content in the parenteral suspension is in a range of 0.5 to 5%, but sometimes it may go up to 30%. तो नॉर्मली सॉलिड कंटेंट क्या होता है पेरेंटल सस्पेंशन का 0.5 टू 5%. 0.5 से लेके 5% तक सॉलिड कंटेंट रहेगा. बट इन केस ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड ऑल दैट इट मे गो अप टू 30%. एंटीबायोटिक्स will have parenteral suspension contain solid content is 30%. Parenteral suspension should be have small uniform size and good syringeability. तो syringeability क्या होता है? Syringeability मतलब ये syringe से पास होना चाहिए. देखो आपका syringe जो होता है वो बहुत ही small होता है. उसका जो opening या फिर उसका diameter क्या होता है? बहुत ही small होता है. So your parenteral suspension should have particle size small enough to pass through that small syringe. That is known as syringeability. Then again, suspension for parenteral use, they are stabilized by using polysorbate 80, lecithin, then imel for EL 620, then plutonic F16. These are the name of surfactants. Sometimes sodium carboxymethyl cellulose may increase the effect of surfactant. Now another kind of formulation known as parenteral emulsion. Parenteral formulation, parenteral emulsion. So main formulation problem for this parenteral emulsion is to maintain the uniform particle size or uniform droplet size. What is the droplet size for parenteral emulsion? तो question आ चुका है. Parenteral emulsion should have globule size or droplet size in a range of 1 to 5 micron. So main formulation problem for parenteral emulsion is to maintain the uniformity of globule size or droplet size. Now it should be in a range of 1 to 5 micron. Now oxyethyl ethoxypropylene in a concentration of 0.3% and lecithin in concentration of 1.2%. They are used as a emulsifier for emulsion. Okay, they are used as a emulsifier for emulsion, preparation of emulsion, parenteral emulsion of cottonseed oil and dextrose. अगर इसका emulsion करना है cottonseed oil, dextrose, emulsifying agent कौन सा है? oxyethyl ethoxypropylene and lecithin. Then stability is again a major problem with the parenteral emulsion. So it should withstand with the autoclaving. It should be stable with the autoclaving. Gelatin, dextran and other cellulose have been found to be aid the stabilizing effect. मतलब क्या? Gelatin है, dextran है and cellulose है. तो वो क्या करेंगे कि emulsifier का stability बढ़ाएंगे. So they have found aid मतलब increase the stabilizing effect. Now
Effect of route of administration on formulation. Effect of route of administration on formulation. तो आपको फॉर्मुलेशन जो बनाना है पेरेंटल, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का इफेक्ट भी होता है उसका. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन intracutaneous. Okay, intracutaneous, how many number of ml? So in case of intracutaneous injection, only 0.2 ml. Intracutaneous मतलब intradermal. Okay, 0.2 ml is rarely used. Subcutaneous 1 ml or less, 1 ml or less. Subcutaneous injection अगर आपको बनाना है तो उसका वॉल्यूम कितना इंजेक्ट करना पड़ता है? लेस देन 1 ml. इंट्रामस्कुलरली नॉर्मली 2 to 5 ml इंजेक्ट करते हैं. 10 ml is or less is given by intraspinally. Intraspinal में 10 ml तक आप दे सकते हो. इंट्रावेनस लार्ज वॉल्यूम अप टू सेवरल लीटर्स. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. बाय इंट्रावेनस रूट यू कैन इवन इंजेक्ट सेवरल लीटर्स ऑफ फ्लूइड्स. So all parenteral preparation must be isotonic. What do you mean by isotonic? It should have same osmotic pressure as that of the blood plasma. Blood plasma का osmotic pressure जितना हो उतना ही होना चाहिए किसका? Solution का. Normally 0.9% sodium chloride. 0.9% weight by volume sodium chloride is isotonic with the blood plasma. Blood plasma में जो osmotic pressure होता है वो 0.9% sodium chloride के solution जो है उतना ही होता है. That's why 0.9% sodium chloride is isotonic or isoosmotic with the blood plasma. Isotonicity is the characteristic that is probably having greatest importance for intraspinal injection because in circulation, because there is a very less circulation of spinal fluid. ये बहुत ही ज़्यादा important है isotonicity किसके लिए? इंट्रास्पाइनल इंजेक्शन के लिए, क्योंकि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का एक तो वॉल्यूम कम होता है आपका और उसका सर्कुलेशन भी स्लो होता है. सो यू कैन ओके देयर इज नो मीन थ्रू व्हिच योर paratonic solution can be diluted easily. Okay, so those solution which are having osmotic pressure equivalent to your blood, that is known as isotonic state. तो जितना सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड में होना चाहिए उतना ही आपके सॉल्यूशन में होना चाहिए, तब वो आइसोटोनिक बनता है. Now if your solution is not isotonic then it is known as a paratonic. If your injection or solution is not isotonic with the blood plasma, it is known as a paratonic. Now it may be either hypotonic or hypertonic. So both for hypertonic as well as hypertonic, the term paratonic is used. Hypotonic मतलब क्या है? So it is less than 0.9% sodium chloride. That is known as a hypotonic. Hypertonic means more than 0.9% sodium chloride. Is hypertonic. तो hypertonic देंगे तो RBC का क्या होगा? Hypertonic देंगे तो RBC का क्या होगा? उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. So if you inject hypotonic solution in the blood, what will happen? There is a bursting of your RBC. Bursting होगा. RBC में क्या आता है? अगर आपने मान लीजिए कि 0.7% बाय वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया है आपका सोडियम क्लोराइड का, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? ज़्यादा. ओके, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा. मतलब उसमें क्या रहेगा कि ज़्यादा वाटर रहेगा और आपके में क्या है? 0.9% सोडियम क्लोराइड का उसका इक्विवेलेंट है. अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो क्या होगा? वहां से वाटर जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से कहा जाएगा आरबीसी में जाएगा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस. ठीक है, जिससे जहां पे ज्यादा है वहां से वो ट्रेवल हो जाएगा. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि सॉल्ट कंटेंट कम है, वाटर कंटेंट ज्यादा है, वाटर मूव हो जाएगा कहां से? फ्रॉम द सॉल्यूशन टू आरबीसी. आरबीसी क्या होगा? फुल जाएगा. आरबीसी में क्या होगा? ब्रस्टिंग हो जाएगा. So there is a bursting of RBC, breakdown of RBC in case of hypotonic solution. So if you inject hypertonic solution मतलब क्या है? More than 0.9% sodium chloride. So मान लीजिए कि 1% sodium chloride, 2%, 1.2% sodium chloride solution if you inject in the human. So what will happen? तो उसमें salt content ज़्यादा है, उसमें water content कम है और isotonicity. Obviously क्या होगा कि जो RBC है वहाँ से water निकलेगा, वो सॉल्ट खींच लेगा उसको. व्हाट विल हैपन? सो आरबीसी विल श्रिंक. तो इसमें इतना सिंपल होता है ये फंडा कि देखो अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो हाइपोटोनिक देने के बाद क्या होता है कि आपके आरबीसी फूल जाएंगे, फूलेंगे इतने कि ब्रस्ट हो जाएंगे. और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे हाइपोटोनिक तो क्या होगा? आरबीसी श्रिंक हो जाएगा. सो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट वन इज फैसिलिटीज अवेलेबल इन द पैरेंटल प्रिपरेशन. कौन से फैसिलिटीज होना चाहिए? Facilities for parenteral preparation. The primary objective of this parenteral preparation is to prevent the contamination. That's why
In that context, you have to design the industry. You have to make the necessary requirement as per the Schedule M of DNC Act. Schedule M क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. उसमें सब आता है शेड्यूल एम में. डिजाइनिंग कैसे होना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्लोर वाल कैसा होना चाहिए, सब कुछ इंडस्ट्री का उसमें आता है. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर parental formulation is to avoid, to prevent the contamination. So you might have seen in the lab, rigid surfaces and corners should be finished with epoxy coating. वहाँ पे क्या रहेगा, ये epoxy coating रहेगा. epoxy coating, तो यहाँ पे corner नहीं रहेंगे. Okay, not a single corner on ceiling as well as not a single corner on floor. Corner जो है, they are corners are minimized by epoxy coating. के ऊपर क्वेश्चन आता है epoxy coating. Floors of industry, they are coated with one of the following polymer, that is epoxy coating. So spray on tile, उसको spray मिलता है. By spraying or painting to form a continuous or smooth seal coating or ceiling and walls. So it can wear and tear and continuous clogging with the detergent. अगर आपने वो continuously detergent से उसको wash किया तो उसका one of the best material for floor is a ceramic plastic content. That is a thin coat over existing rigid flooring. तो जो फ्लोरिंग होता है, जो फ्लोर होता है इंडस्ट्री में, वो फ्लोर में ऐसा कॉर्नर नहीं होना चाहिए. सब घर में होता है. देखो, एक वॉल है और नीचे फर्शी है, तो फर्शी और वॉल के बीच में का कॉर्नर आएगा. वैसा कॉर्नर आपको इंडस्ट्री में नहीं दिखेगा, बिकॉज दैट कॉर्नर इज बीइंग कवर्ड बाय इपॉक्सी कोटिंग. इसके ऊपर इपॉक्सी कोटिंग होता है. नाउ एनवायरमेंटल कंट्रोल कैसा रहेगा एरिया में, पेरेंटल प्रिपरेशन के एरिया में. सो स्टैंडर्ड्स standards of different standards are different for different areas. So for example, there are cleanup area, there is a packaging area, there is a compounding area, there is a filling area. So for different area, different standards are there. So undoubtedly or unquestionably, the entire area used for the preparation of product should be aseptic. So whatever area, whatever environment should be there in the parental formulation plant, it should be aseptic. Product which are terminally sterilized, in that case you may relax some aseptic condition. Product which are terminally sterilized, मतलब बाद में sterilization होता है उसमें. aseptic technique मतलब क्या, right from beginning आपको उसमें contamination होने ही नहीं देना है. अगर उसमें contamination होने ही नहीं दिया आपने, वो ऐसे मतलब sterile रहेगा. but there are certain preparation like ampoules which are terminally sterilized. filling के बाद में उसका autoclaving करते हुआ, so that is terminally sterilized. So you can have some rigid biological control, those preparation which are terminally sterilized. Now traffic control. Traffic control मतलब कोई भी आ नहीं जा नहीं सकता. So access by personnel to aseptic area. Traffic control, only there is access of personnel which are those persons which are involved in the compounding filling. Those people only are accessible, and the access of these people are through the airlock system. They should pass through opening, and double-ended sterilizer are provided to permit the to permit control passage from a non-aseptic area to aseptic area. जैसे मान लीजिए कि आप कोई इंडस्ट्री में काम करते हो पेरेंटल में, तो आप बाहर से आपके कपड़े वगैरह, तो बाहर के एनवायरमेंट से आप अंदर के एनवायरमेंट में जा रहे हो. You are going from non-sterile area to sterile area. So at that time you have to remove your cloth, like remove your stitched clothing. You have to wash your hand. Okay, you have to wear a gown. You have to use face mask, shoes. You have to remove the shoes and all that. You have to wear the gloves. Okay, and then you have to enter in the aseptic area. At the very beginning of aseptic area, you will be find this airlock system. Air will be blown to your whole body to remove all possible contaminant. You have to pass through chambers so that there is a removal of every possibility of your contamination. Then unauthorized the person should not get entry into aseptic area. In housekeeping, all cleaning equipment should be selected for its effectiveness and freedom from lint producing tendency. मतलब क्या, जो वहाँ पे आप गाउनिंग पहन रहे हो, जो वहाँ पे आप कैप पहन रहे हो, so whatever dress you are wearing, whatever the apron you are wearing, whatever gown you are wearing, so that gown should be lint free. Lint free मतलब क्या, lint क्या होता है, lint LINT. What is lint? Lint means a threads. जैसे होता है, अगर कॉटन का, अगर मैं अपने शर्ट लिया या फिर कॉटन का ड्रेस लिया, तो उसमें क्या है, थोड़े से धागे निकलते हैं छोटे छोटे, एकदम माइन्यूट, कभी कभी वो आँख से दिखते भी नहीं. दैट threads, that minute threads, they are known as a lint. So whatever gowns are there in the industry, they are
made from lint free cloths, उसमें धागे नहीं निकलेंगे, तो lint free cloth. Then again surface disinfection, spraying or wiping of surface working station with the isopropyl alcohol or UV lamps that can provide as a alternative. जो भी आप यूज कर रहे हो, जहाँ पे भी फ्लोर है आपका जो आपको यूज करना है, so you have to disinfect that floor by using isopropyl alcohol, IPA or UV lamps. This is very important part. इसके ऊपर कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. एयर कंट्रोल इन द पेरेंटल एरिया, एयर कंट्रोल. So introduction of fresh air and removal of recycled air. Such facility should be there and it is done by air handling unit present in the industry. तो जो भी एयर अंदर जाता है, जो फ्रेश एयर अंदर जाता है और जो अंदर का एयर है वो रिसाइकल होता है, उसके लिए फैसिलिटी होता है इंडस्ट्री में, दैट इज नोन एज हैवैक सिस्टम. हैंडलिंग ऑफ एयर एंड वेंटिलेशन, हैवैक सिस्टम होता है वहाँ पे. एंड पर्टिकुलरली इन द पैरेंटल इंडस्ट्री द एयर इज पास थ्रू दिस हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर. सो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स नोन एज HEPA फिल्टर्स. इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत बार आ चुका. हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, इट इज डिफाइंड एज द these are the air filters which are very efficient and their efficiency is nothing but the 99.97% efficient. They are efficient, like they are 99.97% efficient removing the particles of 0.3 micron or larger size. So इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, what is the efficiency of HEPA filters? So they are 99.97% efficient in removing the particles of 0.3 micron or more, larger than 0.3 micron. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, याद रखो 99.97% removing of particles of 0.3 micron and large. Now these HEPA filters, they are composed, okay, so whatever particles are there, they are composed of either glass fiber, pillars. Remember these HEPA filters, they are made of asbestos से बनता है ये. इंटीग्रिटी ऑफ HEPA फिल्टर इज चेक्ड बाय, तो आपको उसका चेक करना है इंटीग्रिटी कितना एफिशिएंट है. सो हाउ इंटीग्रिटी ऑफ HEPA फिल्टर्स आर चेक, के ऊपर भी क्वेश्चन आता है. सो रिमेंबर इंटीग्रिटी ऑफ HEPA फिल्टर्स इट इज चेक्ड बाय डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट, डॉप टेस्ट. इंटीग्रिटी ऑफ HEPA फिल्टर्स इट इज चेक्ड बाय डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट, डॉप टेस्ट. एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है उसका, HEPA filters are HEPA filters are called as a 99.97 efficient, 97% they are able to they are okay. मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे. सो डाइऑक्टाइल थैलेट नाम का एक लिक्विड होता है, जब आप उसको एयर के सामने ओपन करते हो उसका एक फ्यूम्स बन जाता है. आपको क्या करना है कि HEPA फिल्टर का एफिशिएंसी चेक करना है. सो रिमेंबर व्हाट इज HEPA फिल्टर्स, they are nothing but the high efficiency particulate air filters and they have efficiency of 99%, 99.97% efficient in removing the particles of 0.3 micron and larger. Now if you want to check the efficiency, there is one test known as a DOP test, dioctyl phthalate test. Okay. So at one side you have to introduce the fumes of DOP or dioctyl phthalate. एक साइड से फ्यूम्स इंट्रोड्यूस करो और दूसरे साइड पे चेक करो फ्यूम्स कि कितना फ्यूम अंदर में, पार्टिकल साइज. डिपेंडिंग अपॉन दिस डॉप टेस्ट द HEPA filters may be called as having 99.97% efficiency if not more than 0.03% particles of 0.3 micron are filtered or they are filtered. दूसरे साइड पे कितना पार्टिकल होना चाहिए, not more than 0.03% of 0.3 micron, then it is known as a 99.97% efficient. एक साइड पे आपको डाइऑक्टाइल थैलेट का सॉल्यूशन लगाना है, बीच में HEPA फिल्टर लगाना है, दूसरे साइड पे चेक करना है. HEPA फिल्टर एक साइड पे जो डाइऑक्टाइल थैलेट का फ्यूम्स आता है वो फ्यूम्स पास हो जाएगा आपके HEPA फिल्टर से, बहुत सारा वाई ब्लॉक हो जाएगा 0.3 की माइक्रोन के पार्टिकल, बट कुछ पार्टिकल्स पास होंगे. ऑन दैट बेसिस द एफिशिएंसी ऑफ HEPA फिल्टर्स आर डिफाइंड. So HEPA filters are defined as a 99.97% efficient if not more than 0.03% of particles having size range of 0.3 micron. वो फिल्टर नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा फिल्टर नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा पास नहीं करना चाहिए उसे. So it should not pass more than 0.03% of 0.3 micron size particle. उससे ज़्यादा होगा तो that is rejected. The filter is not able to pass
it should not pass more than 0.03% of 0.3 micron particle size particles. Then it is known as a 99.97% efficient HEPA filter. HEPA filters are called as 99.99% efficient. If not more than 0.01% of particles of 0.3 micron has been filtered. efficiency के ऊपर क्वेश्चन आता है ठीक है याद रखो ये नॉर्मल एफिशिएंसी होता है 99.97%. डॉप टेस्ट में उसका 2 होता है. डॉप टेस्ट करने के बाद में HEPA filters either can be classified as a efficiency based upon efficiency. Those HEPA filters which are having 99.97% efficiency, they should not filter or they should not pass more than 0.03% particles of 0.3 micron. HEPA filters are called as 99.99% efficient if they are not passing not more than 0.01% of particles of 0.3 micron. Now, relatively new air control system based upon the laminar airflow principle is the only mean to achieve the class 100 room. मतलब क्या एक्सप्लेन करता हूँ आजकल जो क्लास 100 रूम कैसे अचीव कर सकते हैं. So class 100 means what? So class 100 area or it is a class 100 clean room that is defined as the room in which the particle count of air is not more than 100 particles per cubic feet. जहाँ पे 100 पार्टिकल से ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं है पर क्यूबिक फीट उसको बोलेंगे क्लास 100 एरिया और क्लास 100 क्लीन रूम. तो मतलब उसमें 100 पार्टिकल से कम पार्टिकल्स होते हैं पर क्यूबिक. क्लास 100 एरिया मीन्स व्हाट? क्लास 100 मीन्स क्लीन रूम और इट इज नोन एज aseptic filling area. Here you will have particle count of air not more than 100 particles per cubic feet. Per feet cubic feet 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए उसको बोलेंगे क्लीन रूम. क्लास 100 एरिया और क्लास ए एरिया सेम टर्म्स. क्लास ए क्लास 100 और क्लीन रूम एरिया और aseptic filling area. ओके कौन से पार्टिकल 0.5 माइक्रोन एंड लार्जर साइज. सो इफ ओके सो व्हाट इज क्लास 100 एरिया अगेन क्लास 100 और क्लीन रूम एरिया और aseptic filling area. Particle count not more than 100 particle per cubic feet of 0.5 micron size or larger size. So it is nothing but it is used for aseptic. It is known as aseptic area. It is used for the filling operation. Okay, aseptic filling. Now in this area air flow should be unidirectional. यहाँ पे एयर फ्लो क्या है यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए मतलब एक ही साइड से एयर आना चाहिए. तो इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है ऐसा मिक्सअप एयर नहीं होता. यूनिडायरेक्शनल फ्लो एक ही साइड से एयर आएगा नॉर्मली फ्रॉम द टॉप. टॉप से एयर आता है और बॉटम से एयर निकल जाता है. दैट इज नोन एज यूनिडायरेक्शनल फ्लो. velocity used or velocity employed in this area it is nothing but the 100 plus minus 20 feet. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. what is the air velocity in the aseptic area or aseptic filling or aseptic operations or aseptic filling sealing is carried out in one of the following area like class 100 class 1000 class 10,000 class 1 lakh. इससे ऑप्शन आएंगे आपको. So class 100 means clean room area or aseptic filling area or grade A area. Now what is meant by class 1000 area, class 10,000 area, class 1 lakh area. There are different type of area depending upon the purpose. So aseptic filling and sealing final step जो है वो clean room area होता है class 100. उसके बाद में एक इससे पहले एक एरिया आता है class 1000 area. उसमें क्या रहेगा not more than 1000 particles per cubic feet of 0.5 micron or larger size. Class 10,000 room or class 10,000 area क्या रहेगा. So particle count not more than 10,000 particle per cubic of 0.5 size micron or larger. And remember class 100 area is used for aseptic filling and preparation. Class 10,000 area is used for it is known as a buffer area and it is used for the operations before process aseptic gowning of personnel. जैसे आपको गाउनिंग करना है जैसे कपड़े चेंज करना है क्लास 10,000 एरिया में करेंगे उसके बाद में aseptic एरिया में जाएंगे. If you want to मान लीजिए कि आपको कुछ इनिशियल प्रिपरेशन करना है so in filling करना है so that can be done in class 1000 area. So we have seen upcoming slide. Don't worry. Now personnel means log. Personnel means employees. Personnel means employees. So they should have good health and they should be subjected to periodic checkup. कुछ एक महीने में 2 महीने में 15 चेकअप होना चाहिए.
ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको सर्दी खांसी है, उसको इन्फेक्शन है, तो वो जाके एसेप्टिक फीलिंग में इन्वॉल्व है, so that will also contaminate your product. They should be health. Okay, the personnel should subject to periodic health checkup. They should cover whole body with the specific clothes. They should take shower before entering into aseptic area. शावर मतलब पानी का शावर नहीं, एयर शावर होता है, शावर एयर शावर. Dark cloths, they are made up of a continuous fiber which make it essentially lint free. जो इंडस्ट्री में क्लॉथ होते हैं वो थोड़े से डार्कन और डर्लिंग के रहते हैं, उसमें थ्रेड्स नहीं आते, दे आर लिंट फ्री ग्राउंड्स. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए. डार्कन दे आर लिंट फ्री, याद रखो. ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टाइप्स ऑफ HEPA फिल्टर्स एंड देयर एफिशिएंसी एंड यूज. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर, टाइप ए, टाइप बी, type C, type D and type E. So what is type A HEPA filters and their use? Type A HEPA filters, they are used in the industry non-critical operations. Non-critical मतलब क्या? Final aseptic filling that is a critical operation. So industrial, they are used in the industry for non-critical operations. And what is the type A HEPA filters? Efficiency. They are efficient in removing 0.3 micron particle size, that is 99.97. So 99.97% they are efficient in removing the particles of. They are used for non-critical. Now class B, or it is known as the type B HEPA filters, they are used for nuclear contaminant. So they are efficient, that is they are having efficiency of 99.97%, removing the 0.3 micron. They are certified by DEO. ये क्या होता है आप बाद में देख लो. Laminar flow. For laminar flow, which kind of HEPA filters they are used? So those HEPA filters which are having efficiency of 99.99%, इसके ऊपर भी आ चुका है. अगर laminar flow आ गया क्वेश्चन में, so what kind of HEPA filters they are used in the laminar flow unit? So those having efficiency of 99.99% of removing the 0.3 micron particle size. Then next is the type D HEPA filters. They are known as ultra low penetration air, ULPA. Ultra low penetration air. So they are efficient in removing of 99.995% of particle size of 0.3 micron. The next one is the type E. Type E HEPA filters. They are used to stop the toxic, nuclear and chemical biological threat. So they are efficient in the removing 99.999% particle size of 0.3 micron. So these are the types of HEPA filters. क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, याद रखो टाइप्स ऑफ HEPA filters. आपने इतना देखा ही नहीं होगा इतने टाइप के होते हैं. काफी बुक में नहीं है ये, बहुत ही 2-4 बुक रेफर करके निकला है. Classes and their respective operations carried out in the parenteral formulation. Classes of area, कितने क्लास के एरिया होते हैं for parenteral preparation and their respective operation carried out in the parenteral. कि क्लास ए एरिया क्या होता है उसमें क्या क्या करते हैं, क्लास बी एरिया क्या होता है उसमें क्या क्या करते हैं, क्लास एरिया क्या होता है उसमें क्या करते हैं, क्लास डी एरिया क्या होता है उसमें कौन से ऑपरेशंस होते हैं. सो फर्स्ट वन इज ग्रेड ए. ग्रेड ए इज नोन एज अ क्लास 100 एरिया. ग्रेड ए इज नोन एज अ क्लास 100 एरिया and it is known as a aseptic filling and preparation area. Clean room, it is known as a clean room. 100 area is known as a clean room or aseptic filling sealing area, and it comes under grade A. So grade A means class 100 and it is used for aseptic preparation and filling. Now class B is known as a class 1000 area. Grade B is known as a class 1000 area. So यहाँ पे 1000 particle per cubic feet, not 0.5 or larger, not more than 1000 particle per cubic feet of 0.5 micron or larger than that. फीट के अंदर, एक क्यूबिक फीट के वॉल्यूम के अंदर सिर्फ 1000 पार्टिकल्स ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए. ओके, इसको बोलेंगे क्लास 1000 एरिया. सो इट इज़ यूज फॉर प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस ऑफ क्लास 100. तो क्लास 100 में जो एसेप्टिक फिलिंग एंड सीलिंग जो चल रहा है उसके पहले जो ऑपरेशंस करने हैं वो आपको क्लास 1000 एरिया में करने हैं. उसके बाद आता है ग्रेड सी. ग्रेड सी इज नोन एज क्लास 10,000 एरिया. इसमें क्या रहेंगे 10,000 particles per cubic feet, 0.5 micron or larger than that, not more than 10,000 particles. Now class D, तो class C में क्या रहेगा, कौन सा ऑपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन टू बी फिल्टर्ड. तो फिल्टर करने से पहले जो प्रिपरेशन
Now class D जो है class D area is known as a class 1 lakh area. So type D means grade D means class 1 lakh area. तो इसमें एक cubic feet में क्या रहेगा not more than 1 lakh particle of 0.5 size or more than that. So it is used for handling of component after washing. एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आता है इसके ऊपर भी. So grade A area means what? Grade A means class 100 area and it is known as a clean room. So what is class 100 area? So in this area particles in cubic feet. So not more than 100 particles per cubic feet of 0.5 micron or larger. 100 पार्टिकल से कम है उसमें तो उसको बोलेंगे ग्रेड ए एरिया और क्लीन एरिया और क्लास 100. So it is used for the aseptic preparation and filling. Then again grade B area, it is also known as a class 1000 area and class 1000 means not more than 1000 particle per cubic feet of 0.5 or larger size. So it is used for preliminary operations of class 100. In class grade C means what? It is known as a grade C is known as a class 10,000 area. 10,000 मतलब क्या यहाँ पे not more than 10,000 particle per cubic feet of 0.5 micron or larger. It is used for preparation of solution to be filtered. Grade D means class 1 lakh area. Class 1 lakh area. Grade D. कभी कभी इसमें कंफ्यूज करते हैं आपको. Aseptic filling and sealing is done in the following grade area of parenteral. तो grade A, grade B, grade C, grade D. आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे match the following grades of parenteral area with their area class. A B C D एक इसमें देंगे grade A, grade B, grade C. दूसरे कॉलम में देंगे आपको class 100, class 10. मैच द फॉलोइंग या फिर डायरेक्टली पूछेंगे कि aseptic filling and aseptic preparation and critical operations are carried out in the one of the following area present in the parenterals. So class 100, class 1000, class 10,000, class 1 lakh. Grade D means class 1 lakh area. So not more than 1 lakh particles per cubic feet of 0.5 size micron or more. It is used for handling component after washing. Next one is a method of isotonicity calculation. So as I have told you 0.9% sodium chloride, 0.9, 0.9% sodium chloride that is weight by volume is 0.9% sodium chloride weight by volume is isotonic with the blood plasma. So if it is less than that, that is known as a hypotonic. If it is more than that, known as a hypertonic. So methods for calculation of isotonicity. There are two methods. First one is known as a freezing point depression method. Second one is known as a sodium chloride equivalent method. तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कितना अमाउंट ऑफ आप कितना ड्रग कितने ओके सो द अमाउंट ऑफ ड्रग which is isotonic with the blood plasma you can calculate by freezing point depression method. So freezing point of blood plasma and tears is nothing but the minus 0.52. What is freezing point of blood and plasma? Blood plasma and tears that is a minus 0.52 degree Celsius. उसको बोलते हैं freezing point. So if any solute is having same freezing point, that means it is isotonic with blood. So solution which freezes or solution which will freeze at minus 0.2 degrees Celsius will have same osmotic pressure as that of the blood plasma. To calculate the freezing isotonicity by freezing point depression method, we have one formula that is nothing but the W is equal to minus 0.52 A divided by B minus 0.52 A divided by B. What is W? Weight of adjusting substances. Weight of adjusting substance मतलब जो जिसको आपको isotonic बनाना है उसका weight in the final solution. Weight by volume. That is gram per 100 ml. Then what is A? A is nothing but the freezing point depression value for adjusting substances. What is B? Freezing point depression of 1% solution, 1% weight by volume solution of सोडियम क्लोराइड. तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है वेरियस ड्रग का उसका अवेलेबल है तो एक बार आपको देखना पड़ेगा. अगर आपको कैलकुलेशन पूछा है तो वहाँ पे मिलेगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ कोकेन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ योर मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट. Then another method is there known as sodium chloride equivalent method. In this there is a formula molecular weight of sodium chloride divided by ionic factor of sodium chloride into I factor of sodium I factor of substance divided by molecular weight of substance. तो ये होता है sodium chloride equivalent method. There are two methods for calculation of isotonicity.
Now, compounding for parenteral product must be in a aseptic condition. Filtration is carried out by using bacteria-proof filters like membrane filters and depth filters. They are the bacteria-proof. Filling is done by using gravitational filling or vacuum filling in the parenterals. Sealing of ampoules, there are two methods: tip seal and full seal method. Ampoules may be closed by melting the portion of glass at the neck to form either bed seal or full seal. तो आपने में भी आप आई डोंट नो वेदर आपको आजकल प्रैक्टिकल है या नहीं. हमारे टाइम पे एम्पूल सीलिंग का एक प्रैक्टिकल था. पूरा एसेप्टिक से बना वो सॉल्यूशन एम्पूल्स में फिल करो सिरिंज से, उसके बाद में वो एम्पूल्स को सील करो, तो हीट करके उसको पकड़ के सब पुल करना आपने किया है. आई डोंट नो. So that is known as a pull seal method, and another method is there known as the tip seal method. Now in the industry, tip seal method is used. Pull seal method कहाँ पे? On the laboratory scale. Now again, number of containers to be tested with respect to batch for sterility testing. अगर आपके बैच में 100 containers है, not more than 100 containers. So if your batch consists of not more than 100 containers, then you have to take 10% or 4 containers for testing, sterility testing. If your batch consists of 100 containers, more than 100 but less than 500 containers, then you have to take 10 containers for sterility testing. If your batch consists of more than 500 containers, then you have to take 2% of that 500 or 20 containers, whichever is whichever is less, whichever is less, whatever is less. Then, if your batch consists of a large volume parenterals, 2% or 20 containers, whichever will be the less, वो आपको लेना है. Now next one is a quality control test for parenteral products in addition to chemical and biological test. इसमें बहुत सारा आता है. पैरोजन टेस्ट आता है आपका, आपने देखा है पैरोजन टेस्ट. उसके बाद में स्टरलिटी टेस्ट होता है, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. पहले ये देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज अ लीकर टेस्ट और लीकेज टेस्ट. लीकर टेस्ट और लीकेज टेस्ट. नाउ टू डिटेक्ट द इनकम्प्लीटली सील्ड एम्पुल्स. तो एम्पुल सीलिंग जो होता है वो कभी कभी इनकम्प्लीट हो जाता है, उसको चेक करने के लिए क्या है? लीकेज टेस्ट. सो टू डिटेक्ट द इनकम्प्लीटली sealed ampoules. So tip seal ampoules are more likely to be incompletely sealed than pulled seal. इंडस्ट्री में कौन सा ज्यादा मेथड यूज होता है? टिप सीलिंग मेथड इंडस्ट्री में होता है. पुल सीलिंग मेथड लैबोरेटरी में होता है. लेकिन टिप सीलिंग मेथड में ज्यादा चांस होता है कि एम्पूल्स इनकम्प्लीटली सील होगा. So that's why this leakage test is done. Now it can be detected by producing a negative pressure within the incompletely sealed ampoules, usually in the vacuum chamber. You have to keep the ampoules in the vacuum chamber in the solution of dye. And what is the dye? इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So methylene blue, 0.5 to 1% concentration of methylene blue in the water is prepared, and that dye is used for the check the leakage test. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. Dye used in the leakage test of ampoule. That is a methylene blue. If you take these ampoules and kept in a vacuum area along with the solution, so what will happen? Due to negative pressure inside the ampoules, the dye will go inside the ampoules and will color it. Okay, so dye will penetrate inside the ampoule and making solution colored. So those ampoule which are colored, that means they are incompletely sealed. अल्टरनेटिवली अगर ये नहीं करना है आपको, तो पूरा पूरा एम्पूल जो है एम्पूल्स रख दो किसमें? डाई सॉल्यूशन में, और उसको कहाँ पे रख दो? ऑटोक्लेव में. तो अल्टरनेटिवली एम्पूल्स submerged in a dye solution can be subjected to autoclaving to detect the leakage test. Okay. Now vials and bottles are not subjected for this test because they consist of a rubber closure. Now next one is a clarity test. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. और क्लैरिटी टेस्ट, क्लैरिटी मतलब आपके इंजेक्शन में पार्टिकल्स है क्या? अकॉर्डिंग टू यूएसपी, ऑल कंटेनर्स टू बी विजुअली इंस्पेक्टेड विद द वायबल पार्टिकल्स मस्ट बी डिस्कार्डेड. अगर किसी भी कंटेनर में लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में या फिर आपको कुछ विजिबल पार्टिकल दिखे, वो कंटेनर फेंक दो, उसको डिस्कार्ड. इन एडिशन टू लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, the USP, United States Pharmacopoeia, has established the limit of 50 particles of 10 micron and larger,
and 5 particles of 25 micron and larger per ml. ये याद रखो, ये लिमिट याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, द यूएसपी हैज एस्टेब्लिश्ड द लिमिट कि कितना पार्टिकल्स होना चाहिए मैक्सिमम 50 particles of 10 micron and larger, not more than 50 particles, not more than 5 particles of 25 micron and larger in size per ml. Now clarity test is done by visual inspection. आपकी खुद के आय से देखना पड़ेगा against the black and white screen. Nowadays instrumental methods are also available based upon the light scattering. पहले तो सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के सामने देखना पड़ता. आई डोंट नो आपने कभी किया है ये. हम हमारे टाइम पे व्हेन वी वाज इन कॉलेज वहाँ पे पूरा एक बड़ा सलाइन का बॉटल लेके आना पड़ता था मार्केट से. आजकल वो सलाइन की बॉटल भी नहीं है. पहले वो ग्लास कंटेनर के बॉटल थे, पूरा ग्लास कंटेनर के सलाइन की बॉटल थे. उसमें एक रबर क्लोजर रहता था, उसमें बनाओ सोल्यूशन ऑटोक्लेव से करके बाद में उसको इंस्पेक्ट करो कितने कितने पार्टिकल्स दिखते हैं उसमें ब्लैक एंड व्हाइट. दैट इज नथिंग बट द क्लैरिटी टेस्ट. अगेन एक्टिव कंटेंट. Now active content or assay of drug that is measured by that is determined by or calculated by HPLC or GC. Then content uniformity, that is it should have around 80 to 15% of label gain, not less than 80%, not more than 115%. Content uniformity.